Honestly, training with Praveen is very, very difficult. He's a monster when he becomes your coach. But I think it's good for yourself only. Thank you, Mahek. Thank you so much. So guys, we have the gorgeous Viva here. Pilates session. Okay, you're going to tell me, how do you feel about Pilates as a wholesome program? So, वर्कआउट के बाद मैं एग्जॉस्टेड नहीं हूँ एंड काफ़ी फ्री और ओपन फील हो रहा है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी एंड बेस्ट पार्ट ये कि क्रॉसफिट में हम लोग ओवरऑल वर्क करते हैं. यहाँ पे टाइनी टाइनी मसल्स हैं जिस पे हम वर्क करते हैं जो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था. मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लेकिन आज मेरे लेग्स शिवर कर रहे थे. लिटरली एंड मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मुझे प्रैक्टिस और करना चाहिए. एंड आप ये दोनों प्रोग्राम काफ़ी टाइम से कर रहे हो. लाइक आई नो दैट you have been a member of Body Pro Coach since long now, and you have been doing a combination of both the workout, which is CrossFit, Pilates. How do you think that the combination really helps you, and आपको अपने में क्या changes लगे? स्ट्रेंथ क्रॉसफिट से एंड पिलाटेस से मैंने रियलाइज़ किया कि बॉडी टोन होती है परफेक्टली एंड और मोस्टली मैंने रियलाइज़ किया वर्कआउट के बाद एक फ़्रेश फील करते हो आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लॉकडाउन में मैंने मिस किया बहुत ज़्यादा. सो यू टेल मी अबाउट टुडेज सेशन. Okay, I'm going to tell you about. So today's session, we trained on her overall body. Started with a lot of core training. We went on to the mat and we did some basic flow work on the mat. Then we introduced the Pilates ring. Then we have done a barrel with her. And after doing that, I took her up to the Wunda chair, and then she trained beautifully on the chair with a lot of grace and a good posture. What you can see, yeah. Okay, you got to tell me that. आपको क्या लगता है कि how has fitness changed your life? Because you have been into fitness since really long now. हम सबको ऐसा लगता है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी पे वर्क करता है. नो, माइंड पे भी वर्क करता है. सो आई फील फ्रेश एंड आई टोल्ड यू ना एक चीज़ों को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो गया. सो वो चीज़ें चेंजेस आए हैं एंड खुद को फील होता है कि अनहेल्दी नहीं खाना है. पता नहीं ये कैसा चेंज है. आई डोंट नो ऐसा होता है क्या सब इन जनरल, बट मुझे ऐसा खुद को फील होता है. इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप आपकी बॉडी रिजेक्ट करना शुरू कर देती है ऑटोमेटिकली. आप बोलोगे नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना. आप बॉडी की ज़्यादा सुनते हो एंड दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. माइंड बॉडी, दैट बैलेंस इज सो इम्पॉर्टेंट. Okay, 2 words for Praveen and Mehak. What you would say? I love you both. I love you too. So seriously, क्या बोलते हैं, हम लोग इन जनरल सोचते हैं कि आप आके वर्कआउट करोगे और चीज़ें चेंज हो जाएंगी. बट जब आप महक और प्रवीण से खुद
पर्सनली ट्रेंड होंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है, क्योंकि छोटे छोटे पॉस्चर्स और छोटे छोटे डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मैं गलत करी थी। आप करते जाते हो Very true. बट आपको एग्जैक्टली जैसे आपने मेरा कुछ पॉस्चर्स ठीक करा है, मैं ऐसी थी, बैक मेरी एकदम स्ट्रेट नहीं थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो इसलिए पर्सनल ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, महक एंड प्रवीण। Okay, lastly, what would you like to tell your viewers about fitness? कि उनको कैसे incorporate करना चाहिए and क्या करना चाहिए, क्योंकि I've seen you working out every day. Like before lockdown, she is a member of Body Pro Coach and I've seen her coming every day. Like not even missing one day of her training. She used to come every day to the box. सो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट बॉडी। मेरा बहुत सिंपल अप्रोच है कि अगर मेरे लिए फ़िटनेस सिर्फ लीन होना या परफेक्ट बॉडी नहीं है। मेरे लिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं काम करती हूँ, किस तरीके से मेरा, अगेन आई एम कमिंग बैक टू माइंड, किस तरीके से मेरा माइंड वर्क कर रहा है। सो ये सब एक लाइफ का प्रोसेस है एंड ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो ही आपको फ़िटनेस पे ध्यान देना है। आई थिंक एज अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिट रहना है, क्योंकि तभी हम लोग अपनी 100% कैपेबिलिटी पे वर्क 100% दे पाएंगे Very अपना। true. हाँ, And I feel that it has also helped you in a lot because you guys have a long, hectic schedule Exactly. of shooting and being an erratic schedule of them shooting. हाँ, So they don't हाँ, have हाँ. proper time. Like they wouldn't do probably हाँ. 8 to 6 or a 8 to 3. हाँ. They would have nights where they're shooting back to back and tough days. एंड फिटनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट यार। It जिस keeps तरह you खाना fresh, खाना आपकी लाइफ का पार्ट है, जिस तरह आपको खाना है, रोज़ उठ के नहाना है, अगर आप नहीं भी नहाना तो बट खाना जिस तरीके से पार्ट है, आई थिंक फिटनेस उस तरीके से आपकी बॉडी, आपकी लाइफ का पार्ट है। हिस्सा है. हाँ, सो Very true. आप अगर आप नहीं इसको आपने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप नहीं वॉक भी नहीं करते हो, रनिंग भी नहीं करते, जस्ट ट्राई, गिव इट अ ट्राई। एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। हमको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। Okay, last question. Why do you love Body Pro Coach? क्योंकि मुझे जिम में ना सिर्फ वेट्स उठाना पसंद नहीं है। मेरे लिए बहुत I know बोरिंग that है। was the first thing when you came and you joined here. इट इज़ Yeah. सो बोरिंग यार, जाके आप सेम चीज़ सेम वर्कआउट डेली करो। सो यहाँ पे बेस्ट है कि डेली वर्कआउट डिफरेंट होता है, एक्साइटिंग होता है, और होता है कि आपको 10 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, आपको 5 मिनट के अंदर खत्म, तो वो चैलेंजिंग है। एंड आई एम अ पर्सन जिसको चैलेंजेस पसंद है, जिसको ऐसा है कि अच्छा ऐसा करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मुझे करके दिखाना है। सो वो मुझे Very मज़ा true. आता है। हाँ, सो इसीलिए अभी मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ कि एक दिन ये वापस अपने रूटीन में आने का। वापस से It is an amazing experience training you. I'm like, जैसे आपको मैं अभी जस्ट बताया, जैसे हम पर्सनली बात कर रहे थे, तो I told her that her movements are really good and she just need to push herself a bit and she's amazing. I'm like, we all get inspired looking at her, coming regularly at about 9 in the morning and works really hard. She does a combination of CrossFit and Pilates. So we want to hear from you. You maintain yourself almost the whole year like this. Very intense, Okay. I must say, and I want to know exactly जो हमने किया। आप प्लीज एक्सप्लेन करो हमने क्या एग्जैक्टली किया है। So basically, we started with a bit of mix of both. I would say kind of Olympic weightlifting, and at the same time kind of gymnastics. So if you watch the video now, you'll get to see that we were doing more of handstand, stomach-facing handstand walk that are like actually gymnastic. And I've seen her. She always keep posting a lot of videos on Instagram. So you get to see her. लॉकडाउन कुछ पॉसिबल नहीं है। पोस्ट लॉकडाउन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक इन शेप। Correct. No, you are in a good shape. I would say that to get probably better a little bit. So actually, she can do really good handstands and all this kind of movement. Of course, this has been I would say like 7 or 8 months now that you must have taken a break because of the pandemic. तो अभी थोड़ा slow है, but yes, the focus of the training was that pushing her beyond her comfortable zones, because I know her already and I've seen her movements. So I knew that if I give her a weight and ask her to do front squat or rack squat, she can really perform well. And exactly, she stayed up to the expectations. We tried. You must have tried, but I'm really happy that I tried. with your performance. Thank you so much. So we did a lot of thrusters, rack squat. We did some really great amount of GHC, which actually is a glute ham developer. That actually works on the abdomen and the muscles around the core. So a great experience training you, and I think I'm highly motivated. I'm going to work out for 3-4 hours today because Really? yeah. so you want to yeah. कल मेरा हल क्या होगा? I think nothing is going to be much because we haven't focused on making you, or probably I did not focus on making you sore kind of stuff. The training wasn't focused on making you sore, but it was all overall working on your fitness levels and keeping that heart rate up and making you challenged in the zone of workout. So
I don't think you're going to be sore much tomorrow. The training wasn't focused on that. So any tip do you want to give me? क्या इसके I think I should take tip from you. No. Just tell me now. What should I eat after this? Okay, that's really good. Actually, an important question. Actually, I think most of the people, not Viva of course, Viva definitely knows much about it. Most of the mistakes that we do, that we take a lot of carbohydrates. So when you, in any case, like जैसे आपने आज शायद banana खा के आ गया, you can definitely take a bit of pre or pause, I would say, but I prefer most of the time as in a post workout, consuming carbohydrates. In this case, I would say if you have a goal of becoming a bit better or probably getting in a better shape, having six-pack or separation of external obliques, it's very much that you follow a very clean diet, which means that keeping the low carb I would say as minimum as possible to about 20 to 30 grams to get those results done. So ये काफी ज़रूरी है. And you said we should not have fruits, Yeah, actually fruits is fructose, so that's something which is very close to sugar. So the more the sugar, the glycogen level will be higher in your body, and the body will not have to break down the stored fat that we have. Your body works is like a bank. हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम उसको save करते हैं, right? Correct. Similar manner your body works. When it gets extra calories or extra carbohydrates, it starts storing. So sewing here. हाँ जी. तो जैसे आप तो काफ़ी fit हो, आपको थोड़े बहुत यहाँ पे आ जाते हैं, but जो you get to see people about 110-20 kg, the whole body is covered with fat. So it's because they're taking too much of carbohydrates or too much of calories. That's a simple calculation. So I would say that when you're watching this video, a take home would be that minimum carbohydrates, do count the calories, and based on your activities, based on your body weight, based on the age. So your BMR, the basal metabolic rate, is going to be based on your age. So you're going to give that calculation of the carbohydrates. Like for example, say kids, they can consume carbohydrates, and that age, the growing factor, they don't really get fat, or probably they don't accumulate that much of fat. But people who is above the age of 21, 22, to start actually really controlling things and knowing exactly how much they're taking and why they are taking, like based on the intensity of the exercise, etc. Okay. One more question I have. I think this is one of the first interviews that interview, you yeah. are asking me questions. No, I have a question. So mostly हम जब carbs अपने reduce करते हैं तो ऐसा feel होता है कि energy level भी कम हो गया. Correct. क्यों ऐसा होता है? देखो अगर आपके पास एक बाइक है, एक Activa है, for example, it can run in any fuel, right, except water. Like आप उसमें पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, even अगर आप गोवा में जाते हो, like you see that kerosene में, like तो Activa gets you the best energy or best mileage or best speed is about by using petrol, but it can actually run in other sources also. Okay. So now what I'm trying to make you understand the whole scenario is that your body can run in any source of it. Can run on protein, it can run on carbohydrates and fats. Now, like for example, in a normal person, they take both. They take carbs and they take fats. So most of the time your body is so confused which fuel has to be utilized for the right energy. But if at all you're going to like जैसे आप यहाँ गाड़ी चलाते हो, आप गाड़ी के अंदर आपकी पेट्रोल की गाड़ी है, right? आप उसमें डीजल नहीं डालते हो ना, तो इंजन खराब हो जाती है. Similar manner. So if you're going to give Engine खराब हो जाएगा. engine खराब हो जाएगा. So if you give say carbs, the body will run properly. But at the same time, the fat can be a much more better fuel. But for example, what happens that if you give fat and carbs, the body understands that the carb can be broken down much more faster. So it approaches the carbs and the fat gets stored. ठीक है? तो हमें ये सिखाना है बॉडी को कि यार तुम फैट को यूज करो. ये सिखाना है. That's nice. Thank you so much. Thank you so much, and it was great training you. And I always look forward to see you run and train you run and keep spreading the positivity and the energy that you have. Thank you so much. guys. Thank you so much. I think मैं आंसर कर रहा था पूरा इस बार. नहीं, अब ये important audience के लिए नहीं है. Thank you so much. Vibha. Okay, Great. thank Thank you so much. Thank you. चल. Bye guys, and चैनल प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और क्या क्या है, और एक बार आके ट्रेन करो प्लीज़.